Hello students, welcome to next lecture in series of machine learning. So today we are going to discuss the topic regression. So first let's understand कि regression होता क्या है. See एक independent variable set है होता है और एक dependent होता है. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है regression analysis is a statistical method to model a relationship between a dependent and independent. ये मैंने बोला एक dependent होता है एक independent variable होता है with one or more independent variables. इस चीज को हम समझते हैं. Now independent and dependent क्या होता है पहले हम बात ये समझते हैं. Suppose एक कंपनी है, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है एक एग्जाम्पल. Suppose there is a marketing company A who does various advertisement every year and get sales on that need and we need to find a annual sale. ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है, एक क्वेरी हम कह लें जिसमें कंपनी में हमें एनुअल सेल निकालना है. सो फॉर कैलकुलेटिंग दैट एनुअल सेल जो फैक्टर्स उसे अफेक्ट करेंगे एनुअल सेल को वो क्या हो सकते हैं. एम्प्लॉय कितने हैं, प्रोडक्ट कितना बिका, प्रॉफिट और लॉस. राइट, तो ये जो चार फैक्टर्स हैं टू फाइंड एनुअल सेल, ये सारे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, और एनुअल सेल जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक कंटीन्यूअस वैल्यू है, तो वो एक सिंपली एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. राइट, क्योंकि वो डिपेंड है अदर फैक्टर्स पे. तो नाउ इफ यू नीड टू establish some relation between an independent and dependent variable, मीन्स अगर हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कुछ एक रिलेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज अ रिग्रेशन एनालिसिस. And now let's read this. Regression is a supervised learning technique. Supervised और unsupervised ये सब हमने previous videos lectures में हम discuss कर चुके हैं. So it is a supervised learning technique which help in finding the correlation between variable and enable us to predict the continuous output variable based on one or more predictor variables. ये चीज हमने बोली है कि correlation between variables और continuous output जो हमारा output होगा. In regression, we plot a graph between a variable which best fits the given data points. यही बात हमने बोली, we'll plot a graph between the independent and dependent variable, right? So इसमें क्या होगा, कुछ best जो फिट हो रहे होंगे उस डेटा पॉइंट्स के लिए एक हम ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो यूजिंग दिस प्लॉट मशीन लर्निंग मॉडल कैन मेक द प्रेडिक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर डेटा. राइट, तो वहां पे यहाँ पे जहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं वहां पर हम आउटपुट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू नंबर होगा. ठीक है, तो जो कि कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा और वो भी दो टाइप के हो सकते हैं. ये क्या, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो इट इज रिटन कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिग्रेशन which are used in data science and machine learning. All the regression method analyze the effect of independent variable on dependent variable. Independent और dependent variable का एक दूसरे पे जो effect है that we're going to see in these two regression types. तो first is linear regression and next is logistic regression. तो जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन हमें मॉडल करना है वो लीनियर रिग्रेशन में लीनियर नेचर का होगा. लाइक हम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ग्राफ में, तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स आर डेटा पॉइंट. दैट मीन्स आपने लीनियर डेटा सेट यूज किया है. ठीक है, टू फाइंड अ लीनियर रिग्रेशन. अब जैसे ये जो सैलरी है, अब लीनियर डेटा पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे 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 अब यहाँ पे जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज हो रहा है और या फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग हमारा सैलरी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे वाई इंक्रीज होगा. दैट मीन्स प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. यही मतलब है कि वो लीनियर नेचर का है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ लीनियर नेचर डेटा सेट. तो हमारा यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर रिग्रेशन. Right, so here is an example of a salary and experience. Let's read out the data which is written here. Ki, here we are predicting the salary of an employee on the basis of the year of experience. Okay, the linear regression equation can be written as y is equals to a plus bx. जब ये y एक dependent variable है, right? यही हमने discuss किया था कि जो other points हैं वो
जो अदर फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है, बट उस फैक्टर्स पे डिपेंड हो रहा है हमारा आउटपुट, तो दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रेडिक्टर वेरिएबल। एंड ए एंड बी यहाँ पे लीनियर कोएफिशिएंट्स है, right? So see, one more thing, there is a lot of difference in count of independent variable. Is how many factors are there that is affecting the annual sale. यहाँ पे एक या उससे ज्यादा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इफ ओनली वन फैक्टर इन दिस केस, जैसे हम यहाँ पे अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए वन फैक्टर है खाली, जो केस पे डिपेंड, जो हमारा आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। बट इफ देर आर मोर देन वन फैक्टर, तो उसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन बोलेंगे, राइट? तो हम सिंगल वाला तो हम ऐसे लिख देंगे, सिंपल लीनियर इक्वेशन तो हमारी हो गई y इज इक्वल्स टू a प्लस bx, एंड मल्टीपल में हमारी थोड़ी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी। If there is only one point x, then such linear equations are called simple linear regression. If there are more than one linear input variable, and that is called a multiple linear regression. तो यही हमने अभी बात करी। नेक्स्ट इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है कि जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अनदर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, दैट इज आल्सो यूज्ड टू सॉल्व द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट? तो इसमें क्या है कि इन दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वी हैव डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ बाइनरी और अ डिस्क्रीट फॉर्मेट। दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट निकल रहा है दैट विल बी इन अ डिस्क्रीट और बाइनरी फॉर्मेट, दैट इज 0 or 1, right? To logistic, and if we talk about forming the best model for any kind of relation between independent and dependent में जो हम एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसके रिलेशन को देखते हुए, तो इफ वी वांट टू फाइंड द बेस्ट मॉडल फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, तो independent variable can be continuous or binary, deals with the probability between the dependent and independent variable. So one of the basic algo to solve the classification problem, that is, it is a logistic, because it is underlying technique is similar to linear regression, right? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम वर्क कर रहा है कैटेगोरियल वेरिएबल्स पे, जैसे कि 0 1, yes or no, true false, spam और not spam. And logistic regression basically एक method है that is used to predict a dependent variable given a set of independent variables. यहाँ पे set of independent variables दे रखे हैं, but हम वहाँ पे dependent variable find out कर रहे हैं, right? तो such that dependent variable यहाँ पे क्या होगा, categorical form में हो सकता है। Remember that कि logistic regression जो है, तो dependent variable यहाँ पे categorical है, but when we'll discuss about the linear regression, तो वहां पे continuous है, यहाँ पे कैटेगरी फॉर्म में 0 1 ट्रू फॉल्स जो आउटपुट हमारा आ रहा है, बट हमने जो लीनियर रिग्रेशन में बात करी दैट इज इन continuous फॉर्म में था, राइट? So here we are given a data. This is a kind of example, right? We are given a data on a student exam result, and our goal is to predict whether a student will pass or fail based on number of hours slept and hours spent for studying. So we have two features, hours slept, hours studied. तो ये दो क्लासेस हो गए। either हमने कहा ना कैटेगोरियल फॉर्म में, तो दैट इज पास्ड होगा तो वील राइट 1, इफ इट फेल तो 0। तो यहाँ पे हमें जो डेटा दे रखा है, स्टडीड 4.85, स्लेप्ट इतने 9.63 आवर्स। सो व्हेन वी विल सी दिस डेटा, जहाँ पे हमारा क्या बोला हमने, अगर अगर आवर्स स्पेंड ऑन स्टडिंग मोर है, तो दैट मीन्स student will get passed, right? So on this basis, when we'll find out, so 1 we have represent 1 as a passed and 0 if it got failed, right? So in order to map predicted value to probability, हम यहाँ पे sigmoid function का use कर रहे हैं। फंक्शन मैप करता है किसी भी रियल वैल्यू को इन अनदर वैल्यू दैट इज बिटवीन 0 1। जैसे आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हो, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने पास के लिए हम इट इज शोइंग विद द ब्लू डॉट्स, एंड फॉर अ फेल वी आर शोइंग विद द रेड डॉट्स। जो भी हमारी वैल्यू, जो भी हमारे 0 1 के अकॉर्डिंग, जो हमारा वैल्यू 0 1 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, दैट इज all those points are mixed, so it is not possible for us to make a
line or can differentiate these points, right? So for this we'll use sigmoid function, and for that hamara jo value hai, that will come between a 0 and 1, right? So in machine learning we use sigmoid function to map a prediction to probabilities. For this we use this formula sz is equals to 1 upon 1 plus e minus z, and all the terms, what these terms means, it is written in here as SZ is the output between 0 and 1, and Z is the input to the function, and E is the base of a natural log. Now, when we have used the sigmoid function, then kaisa ho raha hai? So, logistic regression uses sigmoid function or logistic function, which is a complex cost function used to model in logistic regression. जैसे हमने बात करी थी, write the values between, we'll find the value between 0 and 1 for each factor, right? So basically in logistic, the output is always in categorical form. So when the resultant outcome has two possible values, it is always desirable to have a model to predict 0 or 1 or proper score that range between 0 or 1, right? So when we'll find the value between 0 and, suppose here we'll mark one value as a one value as a threshold value, that is 0.5, right? If that value is smaller than 0.5, then it lies in the category of a fail, that means zero category. If its value will lie is greater than 0.5, then it lies in the category or class 1, right? So any value that is below 0.5 is class 0, this, and any value that is greater than 0.5 is class 1. So this way we you can easily get binary resultant value. This is what we actually need when it comes to the logistic regression. Thank you.